Hello aspirants, before we move on with our video, let me share a great opportunity with you all, wherein you can get your doubts and queries related to civil services preparation answered directly by IRS officers on our panel, Mr. Pramod and Mr. Arun. Now Mr. Arun cleared the exam in Hindi medium with Hindi literature as the optional. So we would like you to use this opportunity, in fact this rare opportunity, to improve your preparation. Do send in your queries through WhatsApp or email. The same will be answered in the upcoming sessions. Thank you. As only 2 months are left for the prelims examination, this video mainly explains the strategy on how to prepare for prelims 2020 in the next 2 months. So moving to the strategy, the last minute revision strategy for prelims 2020 should include these 6 points. The first is you should practice previous year papers from 2011 to 2019. Second, you should practice MCQs to increase efficiency. Third is you should practice questions for time and speed management. Fourth is you should revise the core concepts as well as revise the current affairs, which may include schemes and institutions. And sixth is you should practice for reducing temptation for negative marking. So I will explain each point in detail with the proper strategy so that you can achieve good marks in prelims 2020. So now moving to the first point, that you should practice previous year papers mainly from 2011 to 2019. Because before 2011 the questions were mainly factual in nature, but after the change in pattern from 2011 the question has become more conceptual as well as more analytical. So you should practice questions from 2011 to 2009. And what will be the benefit of it? This will help you in understanding the trend of the questions as well as the weightage of the subjects. So you will be able to analyze the form of questions which are asked in particular subject and you can prepare properly based on that. And the other important thing is practicing of previous year papers can also help you in jotting down the new topics which you may have left while preparing for prelims 2020. And if you are practicing a particular paper and if you have found any question confusing, tricky or difficult, then you should point out that question with a star mark. Because before prelims examination, you will not be able to reattempt the complete paper, and pointing out the tricky and difficult question will help you in proper revision. You should practice as many MCQs as possible, as this will increase your efficiency as well as help in time and speed management. So for the time and speed management, you should practice one mock paper or a paper of 2 hours daily, mainly in the exam scenario, as this will prepare your mind for the examination. And secondly, practicing of MCQs will help you in analyzing your strengths and weaknesses, by which you will be able to increase your efficiency. So after practicing a particular paper, you should analyze the answers and you should analyze the subjects in which you are weak. For example, अगर आपके polity में questions बार बार गलत हो रहे हैं, then your weak point is polity, and you should revise the concepts related to the polity. So practicing MCQs will help you in analyzing your strengths and weaknesses and will increase your efficiency. Now moving to the tips to revise core concepts. अगर आप prelims के papers को analyze करेंगे तो आपको polity, geography, economy, mainly इन subjects के जितने भी questions होते हैं वो conceptual questions होते हैं, और इसमें आपसे कोई ना कोई particular topic पे question पूछा जाता है आपकी analytical skill और conceptual knowledge को check करने के लिए. For example, in polity, the question can be related to the functioning of the parliament or related to the functioning of the president, prime minister or council of minister. Similarly, in geography, the question can be related to the physical geography, mainly the climatology, oceanography or geomorphology. And in economy, the definitions of particular economic terms can be asked. So first is, if you are revising for core concepts, what should be your focus areas? In our website iashelpdesk.in, under GS Prelims section, under each subject, for example, I am taking ecology and environment, the trend analysis of particular subject is given,
along with the questions which are important and which have been repeated in the previous years. So these topics should be your focus areas. Next is how to apply reverse engineering process. The reverse engineering in revision of core conceptual questions means that if you are practicing a particular MCQ paper and the first question is which of the following pairs related to the acts and their provisions have been correctly matched. So the 3 acts have been given in this question. First is Charter Act of 1853, second is Charter Act of 1858 and third is Indian Council Act of 1861. If you are following the reverse engineering process, then you read the question and read the answer simultaneously without solving the paper, and directly by reading the explanation this will revise your concept related to it. So this is known as a reverse engineering process, in which you are revising your core concepts using the questions rather than first reading the material. So the benefit of this process is, by this process you will be able to revise and attempt more MCQs in less time, and in each paper usually the 100 questions are of different topics. So by solving one paper you are revising 100 topics. तो जब भी आप अगर इस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन और आंसर को साइमल्टेनियसली यूज करिए. ये आपको टाइम और स्पीड मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगा और आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और मैक्सिमम रिवीजन भी हो जाएगा. The third point is how to use spaced repetition method. Spaced repetition method means कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज जियोमॉर्फोलॉजी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अगर आपने रिवाइज करा, सो अकॉर्डिंग टू स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड यू शुड रिवाइज दैट टॉपिक अगेन विद इन 1 day, within 1 week and within 1 month. Then it will move from the temporary memory to the permanent memory. So you should follow this trick for the revision. क्योंकि अगर आप हर टॉपिक को अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और उस चीज को अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, देन वो टॉपिक आपके दिमाग से हट जाएगा. So you should use spaced repetition method. And the fourth thing is how to analyze the strength and weaknesses. अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू दैट वो आपका वीक पॉइंट है. And in the next 2 months you should work on improving your strengths rather than focusing on the weaknesses. क्योंकि आप इस 2 month में कुछ नया नहीं पढ़ सकते, या कुछ भी अगर आप नया सब्जेक्ट कोई भी नई बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे, then your mind will not be able to handle it and you will not be able to revise the other things properly, और आप पेपर में ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे. So for the next 2 months आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नई बुक, कोई भी नया नोट्स हो, या अपार्ट फ्रॉम करेंट अफेयर्स कोई भी नया नोट्स हो, किसी का भी जिस्ट हो, कोई भी बुक का जिस्ट आया हो मार्केट में, वो आपको नहीं पढ़ना है. यू शुड जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, और आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ताकि आपके जो एरियाज स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका पॉलिटी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू शुड, सो योर एम शुड बी कि अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं तो आपके वो क्वेश्चन सही हों. सो यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट रेदर देन फोकसिंग ऑन द वीकनेसेस. और आपको अब जो भी रिवाइज करना है वो आपको अपनी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में लाना है, और फॉर दैट यू हैव टू यूज स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड. और अगर आप अभी भी कुछ नया पढ़ेंगे तो वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में ही रह जाएगा और उससे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी फायदा नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम इट विल क्रिएट ओनली कंफ्यूजन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज द करंट अफेयर. करंट अफेयर्स रिवीजन में आपने लास्ट 1 ईयर से जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, किसी भी मैगजीन से आपने पढ़ा हो या आपने अपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाए हैं, तो आप उन एरियाज को रिवाइज करिए. और यू शुड फोकस mainly on the schemes, programs, policies, institutions, organizations in news. क्योंकि आप इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ट्रीटी अगर आई है लास्ट 1 ईयर में तो उसके बारे में वो क्वेश्चन
करंट अफेयर्स में आता है. सिमिलरली अगर कोई साइंस की टेक्नोलॉजी आई एंड इन दिस ईयर due to the coronavirus crisis and also the other changes in the biomedical and the space technology, the weightage of science in the prelims 2020 can be increased. So you should focus on science current affairs also for prelims 2020. इकोनॉमी में अगर आपको करंट अफेयर्स में मेनली फोकस करना है तो जो भी बजट में पर्टिकुलर टर्म्स आए हैं, क्योंकि बजट की एनालिसिस या इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस जो भी है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में आएगी, लेकिन उसमें पर्टिकुलर जो भी टर्म्स, स्कीम्स या कोई भी अनाउंसमेंट हुए हैं उसके फीचर्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. तो इकोनॉमी में आपको पर्टिकुलरली सिर्फ डेफिनेशंस या पर्टिकुलर टर्म्स में फोकस करना है जो आपके न्यूज़पेपर में आए हैं. सिमिलरली अगर आप गवर्नेंस या पॉलिटी एंड गवर्नेंस को देखेंगे तो आपको स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को रिवाइज करना है. इन्वायरमेंट में आपको कोई भी स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन न्यूज में है उसके बारे में आपको पढ़ना है. करंट अफेयर्स में आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करें rather than reading new magazines or new current affairs from different sources. And the last and most important part of the strategy, you should focus on accuracy rather than attempting all the questions and losing your marks in negative marking. क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में पेपर दे रहे होते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ के हमें लगता है कि इससे रिलेटेड हमने टॉपिक कभी पढ़ा था या कहीं पे न्यूज़पेपर में या कोई हमारे पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी नोट्स में, और हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, शायद आंसर ठीक होगा, एंड इसी टेम्पटेशन में हम वाइल्ड गैसेस करते चले जाते हैं और हमें उस समय नहीं पता चलता कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस में हमने गेस वर्क करा है, और फिर जब हम फाइनल अपने मार्क्स को काउंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा स्कोर बहुत ही डाउन हो गया है. तो इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहिए, वाइल्ड गैसेस को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए. अगर आप आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस को निगेट करके 2 ऑप्शंस में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप गेस वर्क में जा सकते हैं. अगर आप टोटली कंफ्यूज हैं तो वाइल्ड गैसेस में आपको नहीं जाना चाहिए. और अगर आप एंड इफ यू आर मूविंग फॉर द गेस वर्क देन एट एनी कॉस्ट यू शुड नॉट अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस, ताकि अगर आपका निगेटिव मार्किंग से खराब भी होगा तो स्कोर इतना नीचे डाउन नहीं जाएगा. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड मेनली फॉर द प्रीलिम्स 2020, you can mail us at info@iashelpdesk.in or WhatsApp at 85860 For more guidance, please visit our website www.iashelpdesk.in